Hello learners, welcome to this session. In this session, we will be talking about Sustainable Development Goals. You must be aware of Sustainable Development Goals, that is the Global Goals or SDGs, what we term as. So this topic is related to course MSD 019 of Master of Arts in Sustainability Science program. The basic idea of today's session is to give you an idea about what are sustainable development goals, what do they mean, and what are these, what do they entail, and what is the common thread that links all the 17 sustainable development goals. So learners, first of all, let us have a look at the history of the SDGs. How did they come into being? How the idea was proposed? So when we go back to the timeline, it is actually when the world is struggling to meet the goals of reducing poverty, providing education, and for the betterment of the communities across the world. Later in 2000, you must be aware that the Millennium Development Goals were formulated. These Millennium Development Goals were thought to be achieved by 2015. That was the time in 2015 when there was UN Sustainable Development Summit. And in that summit, it was resolved that the world needs something more. It needs something called as the blueprint to know where we see ourselves. What is the type of future that we have envisioned for ourselves? And therefore, at that time in 2015, there was this agenda, this goal for 15 years was framed. There was a document which was released which was called Transforming Our World. They were transformatory goals, and these goals therefore were put into this report, that is the 2030 Agenda for Sustainable Development. It was in 2015 and it was proposed that these goals will be met by 2030. These goals are 17 in number. So let us see what actually is there. The basic idea of sustainable development revolves around the principles of 5 Ps. These are the 5 Ps which are very important and which are related to every individual, every community in every country. So these 5 Ps, out of this, number 1 P is people. Humans are at the basis of development. Everything is cornering the human beings. That is ensuring good quality life of the people, providing them good education, seeing that they get good food. That is people, talking about human beings as a life. Another P is planet, talking about the ecosystems, natural resources which make us flourish, without which we cannot survive, and looking into the present day state of the degradation of the environment, this P also holds a quite importance. We cannot think about welfare of the people unless and until we talk about the health of the planet, health of the forests and other ecosystems. Another P is called prosperity. That is, there is no denying that economic progress is vital for improving the standard of living of the people. So P for prosperity is also very important. And the Sustainable Development Goals, through its various targets and indicators, also talk about the prosperity, how to bring about the prosperous world where people are getting full access to all the facilities so that they are having good quality life. Another P is peace. That is, seeing that there is a global cooperation, there is a peace, there is no conflict among different regions, among different countries. And to see that we are able to meet all these 4 Ps, we are thinking about another P which is very important is partnership. So when you will further see about all these sustainable development goals, when we will be seeing to these goals one by one, we will be finding that all these 5 Ps are well taken care of. So again, summarizing, these 5 Ps are people, planet, prosperity, peace and partnership.
So when you look into SDGs 1 to 17, we must also see that none of the P is neglected while we try to achieve these sustainable development goals. So learners, now let us see what are these SDGs. This is the, on screen you can see that there are 17 SDGs along with their logos have been mentioned. These 17 SDGs have in all their 169 targets and their indicators. Each goal has been specified number of targets which are meant to be achieved. So starting from goal number 1, that is no poverty, and going on through different goals, you will find when you carefully look at these 17 SDGs, you will find that these 5 P's which we just now talked about have been integrated. Or in other words, whenever we talk about sustainable development, it is a known fact that sustainable development is all about society, economy and environment. When you carefully study about the 17 SDGs, you will find that some of the SDGs you will find are about the environment, some of the SDGs are about economy, some of the SDGs are about the society, that is the people. And so they, we can say that they are very comprehensive and include most of the things which are essential for the 21st century development. So learners, now let us look into the details of these SDGs. What do they entail, and how we must learn about these SDGs. So SDG 1 is about no poverty. Poverty has various forms, it has got various dimensions. So goal number 1 of sustainable development goals is ending poverty in all its forms everywhere. After 2015, there has been a decline in the number of the poor people across the world, but still, because of so many factors, we are still finding that many of the people are poor, they live below the poverty line and struggle to get the basic needs also being met. So one of the important goal is no poverty, that is reduction in the number of the poor people, seeing that there are equal chances of growth available, and also looking into the gender aspect of the poverty. So looking into the various forms and multiple dimensions of the poverty. Goal number 2 is about zero hunger. As we all know, hunger is caused due to poverty. It is a vicious cycle because the poor do not have food, and since they do not have food, any energy, they remain and continue to remain poor. So goal number 2 is about ending hunger, which is very important because hunger also takes various forms, and one of the important component of our food is nourishment, or you can say nutritional security. So SDG 2 is also about providing nutritious meal to children, to women, to all the people. Also it talks about sustainable agriculture. It also talks about increasing in the variety of the foods, giving importance to traditional foods, and also according to the various studies which have been conducted, it is showing that the food related diseases, particularly which are related to undernourishment or which are related to lifestyle diseases because of poor calorie intake, poor quality food intake, they are growing. So this SDG also looks into the factors affecting the hunger and the food and makes an attempt to see that how we are able to end hunger type problem, which is very common in the societies. Goal number 3 is good health and well-being. It talks about providing healthcare facilities to the people. It also ensures universal health coverage, and it also discusses about the importance of vaccination, importance of providing medical aid, not only the physical health but also due emphasis has been given to the mental health related problems. Also there has been seen that there is a starking difference in the life expectancy
of the people in the countries which have the highest life expectancy and in the country which has the lowest life expectancy. For example, Hong Kong has the life expectancy of 85 years, while on the other hand Nigeria is characterized by the life expectancy of 52 years. So this way you can see there is a great difference. So to reduce that difference also, so why, what are the causes, what are the consequences? So this SDG is about health, which is gaining prominence nowadays, looking into the various factors and environmental and other determinants of health, and ensuring good health and well-being to the people is one of the major objectives of these goal number 3, that is good health and well-being. Goal 4 is about quality education, providing inclusive quality education, free and compulsory school level education to children, providing vocational education, making efforts to see that there are skill related components in the education, taking care of the education of the women, giving importance to open and distance education, online education. So this goal also seeks to look into the needs of the people in terms of improving their knowledge and improving their educational attainment. So goal number 4 consists of 10 targets, because in each of the goal, when you study in detail, you will find that there are certain targets which have been given, and these targets are also further explained by giving indicators. So when you study the different targets under each goal, you will find that most of the components which are related to that goal have been clearly indicated. Goal 5 is about gender equality, because despite that fact that lot of improvements have been made towards women empowerment and women related welfare programs have been launched by the governments across the world, still we find that gender equality is a challenge for the societies, because when you look into the reports, it will take almost around 300 years to end child marriages, or it will take more than 400 years to achieve gender equality in the society. So these are some of the reports which have come, and therefore which urge further the nations to take steps for improving the gender equality. So under this goal, there are certain provisions and certain mentions have been made about providing employment, improving the workforce participation rate of the women, provisioning of gender responsive policies in education, health and other things, ending domestic violence, and also checking the female infanticide. So these are some of the things which have been mentioned. So as because half of the population is women, and a country and the world cannot prosper and we cannot think of achieving the sustainable development goals unless and until we include this major proportion of the population in all our endeavors. So therefore gender equality is of utmost importance. Goal 6 is about clean water and sanitation. We know that water is a scarce resource and it is getting depleted day by day because of over extraction of the water, because of the pollution of the water. So water sustains life, and there are certain ecosystems which drive the water resources. So goal number 6 is all about providing clean water and sanitation, because we know that millions of people in the world are devoid of clean drinking water. They do not have access to proper sanitation facilities, and in turn they fall sick and are not able to be equally productive. So this goal ensures availability and sustainable management of water and sanitation for all. Goal number 7 is affordable and clean energy, because energy resources are clean and also they are dirty. So we know that the dirty energy resources have led to problems like climate change, and hence
promotion of the clean energy is very important to achieve net zero by 2070. So promotion of the renewable sources of energy like solar, wind, hydro, geothermal, etc. and seeing that our energy resources are clean, they do not pollute the environment, and for that creation of the suitable infrastructure and providing proper energy related, conservation of the energy related information, continuously having energy audits. These are some of the things which are very essential, because with the growing urbanization, industrialization and other things, the energy demand is increasing, but with that the resources are not increasing. We need electricity, but the way the electricity is produced is not an environmental friendly procedure. So we have to check that how we are generating the electricity and how we are able to conserve the energy so that it does not pollute the environment and remains equally efficient. Goal 8 is about decent work and economic growth. It ensures that the livelihoods of the people are so that the workers are working in the decent working environment. There is a full scope for entrepreneurship. Lot of importance has been given to skilling of the population. Lot of importance has also been given to promoting innovations in the various sectors, and therefore Goal 8 is about creating a safe working environment for the people, so that it also helps in nurturing the economy of a region. And for that we have seen in various instances where the children are working, the women are working, and it is not at all a safe environment. And in turn what happens is that there are occupational hazards, there are different other types of unsafe practices going on, which in the long run prove to be very detrimental for the environment, for the health of the people, and in the economy also. So Goal 8 is about decent work and economic growth. Goal 9 is industry, innovation and infrastructure. Whether it is energy, whether it is agriculture, everywhere now there is a need to look into what better infrastructure facilities can be provided, so that there is a minimum wastage of the resources and maximum output we are able to achieve. So by the means of various innovative mechanisms, by means of clean development mechanisms, by utilizing the knowledge and technology, we are able to create spaces in such a manner that maximum benefits we can achieve. So creation of the planning of the cities in such a way, planning of our whole industrial ecology in such a way, so that there is a you can say a lot of emphasis upon proper infrastructure, whether it is in terms of energy or our cities or our agriculture, so as there is a sustainable infrastructure development, and in that way innovations can be promoted. So in this also there are different targets and indicators which have been specified. Goal 10 is about reducing inequalities. Inequalities are you can say like a bottleneck towards achieving the sustainable development goals, because when we see all around, there are inequalities existing in the society on the basis of the class, on the basis of the gender and so on. And therefore this goal aims to reduce the inequalities, and it also ensures that equal pay for equal work, creating a suitable environment, providing education, and seeing that there is a total elimination of inequality in every sector, in every society, because that is something which is very important while we talk about the other sustainable development goals also. Goal 11 is about sustainable cities and communities. We very well recognize the importance of city planning, and nowadays sustainable urban development and sustainable city planning is very important. How the
cities are designed so that there is proper transportation, proper communication, proper waste management, proper facilities provisioning to the residents. So in the times to come, by 2050, it is believed that 60 to 70% of the people will be living in the urban areas. So how does our urban infrastructure support this growing number of population? What methods have been taken? So this goal is very important when we look into the future perspective, because looking into this current state of the cities at present, we need to think back that what kind of life and what kind of infrastructure facilities are we going to provide to the future residents of the urban areas. So creation of the green buildings, creation of the urban green spaces in the urban areas, how the people will be commuting, what energy sources they'll be using, how the markets will function, and altogether whole urban economy. So it is all about sustainable cities and sustainable communities. Goal 12 is about thinking that how we are using our resources while we manufacture. So sustainable consumption and production. We very well know that because of our economic activities, the production increases, but along with that, the wastage also is growing manifold. Checking that the means of production, giving emphasis to circular economy, and thinking about the designing of the products in such a way that we are able to get maximum output with minimum wastage of the energy resources, water resources, and also checking how much of the waste is being generated. So it is quite important for industry as well as the agricultural methods, that how we as a responsible citizens, how we achieve this goal. Goal 13 is climate action. We very well know that climate crisis is one of the important emergencies that we are facing today. And the causes of the climate change are well known because of fossil fuels, and the impact of climate change are clearly visible in the form of increasing in the frequency and intensity of the natural disasters. And it also leads to migration of the people from one place to another and growing environmental problems, whether it is onset of the zoonotic diseases and other things. That climate action holds quite importance because it affects every sector from agriculture to our urban areas. Goal 4 is about life below water, for example, the water resources, checking the over extraction of the water, talking about the coastal ecosystems, marine ecosystems, taking care of the marine pollution which is happening, checking that how we are able to leverage the blue economy. These are some of the important things which come under life below water, and therefore it gives due emphasis to the water bodies, the fresh water as well as the marine water bodies, and also not just the water bodies in terms of the resources, but also talking about the aquatic organisms which thrive in these water bodies and which are also a source of food and also function as the raw material for many of our activities. Goal 15 is about life on land. It's about the forest, about the land use patterns, about agricultural lands, about the grasslands, so and also the dependent biodiversity which is there, which thrives on the land. So it is very important to see that how we are able to protect and restore the terrestrial ecosystems, and this goal also has certain targets and indicators associated with it. And we very well know that human population growth is one of the important factors which has led to dwindling forest resources and also increasing industrialization, mining activities. All these things are taking place on the land. The result is well known, and hence we must make efforts to see that how we are able to protect our important land resources. Goal 16 is about peace, justice, and strong institutions, because we need good governance. We need strong institutions to see that SDGs are met and none of the stakeholder is devoid. So this functions to see that how strongly we have built our institutions
and how strongly the rules are being implemented, and how we are able to bring about a kind of transparency in the working of the organizations, and that way it will promote peace and justice. Lastly, the final goal is partnership for the goals, which is very important, that global cooperation, international support and coming together is very important for the achievement, because when you look into these goals, it becomes very much clear that the achievement of one goal impacts the other goal. For example, when we make efforts to see that we are able to provide clean water and sanitation, automatically it helps to achieve education, it helps to protect our water bodies, it helps to see that the gender equality is met. So these goals are interlinked with each other. And for the learners, when you have seen these goals, you must have got an idea that how economy, environment, and the society has taken a place while these SDGs were designed. For example, goal number 1, 2, 3, 4, 5 and 16, if you see, you will find that they are related to people, whether it is poverty, whether it is zero hunger, whether it is education, health, and so on, and the peace. So they are related to society. Similarly, when you see about the goals related to economy, you will find that goal number 7, 9, 10, 11, where it is talked about reducing inequalities or sustainable cities and communities or proper work environment or affordable and clean energy, they are all related to economical aspect, how you can progress. And clearly goal number 12, 13, 14, 15, if you see, they are related to environment. Goal number 6 and 12, 13, 14, 15, where the responsible production and consumption, climate action, life on land, life on water. So there is a beautifully, when we see to these goals, we find that there is a beautiful amalgamation of different features of the society, environment and other things. So while we conclude this, we can say that SDGs are important, and already the clock is tickling. It has to be achieved by 2030. But looking into the present state, many of the SDGs, when we look at the report of the SDGs every year, we find that only 15% of the SDGs are on track, while many others have taken a backseat, mostly because of the climate related emergencies which are coming up very fast, which are leading to natural disasters, and the pandemic which has occurred in the past has led us to go several steps back while we are on the way to achieve sustainable development goals, particularly when we explore the state of the education or the people who are living below the poverty line, that has severely impacted. But still we must see and we must make efforts to further make strides so that we are able to achieve the sustainable development goals. And one of the important idea behind sustainable development goals is no one should be left behind. So when you look into the various targets and indicators, you will find that none of the communities, none of the sections of the society, and none of the important stakeholders, you can say, and also not only it is about the people or the communities, but it is also about the other organisms which are inhabiting the planet. So when we talk about life below water, as I said, it is not just about the water resources as for our resource point of view, but it is also about the aquatic, the marine biodiversity which lies beneath. So life below water, when you see to it, or when you talk about life on land, it is not just about because we have drafted SDGs, it is only about us, but it is also about the various life forms which exist on this planet. Further, it is also about the economy. So in a nutshell, we can say that SDGs are people's goal, and we only have to make efforts to see that we are able to achieve them by 2030. Thank you so much.
Do you wish to be part of a television studio like this or any other media system? Or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets a benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOJNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is a bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. Session as part of the January 2024 admission cycle. University started its registration process. The registration for January 2024 session, you need to visit the university website. We have the dedicated admission portal where you have to apply the required desired program. In this session particularly, we are going to discuss about the academic programs offered by the School of Journalism and New Media Studies in the area of media and communication studies. I am Arul Selvan, faculty and director of school, and I will take you through the various academic program of our school for next 1 hour about the details, academic requirements, fee structure and other required details. I'll share all the academic programs of School of Journalism and New Media Studies. Before introducing the school's academic programs, let me explain the broad concept behind the academic training and requirement in the field of media and communication studies. As you know, there are many academic programs which are directly linked with society, linked with the academic and with a lot of employment opportunities, career opportunities. One such academic program, academic discipline is media and communication studies.
Media and communication covers wide range of activities. Includes newspaper, that's a traditional newspaper, magazines, radio, television, film, and online. These are the broad areas of media and communication. This is for industry oriented. Other than that, a research and a teaching job, career opportunity in the teaching and research is a separate discipline altogether. But we'll try to understand all this industry, teaching and research in one broad umbrella. Primarily, in the media and communication studies, the basic requirement in many academic programs always concentrate on specific skills and competencies. One of the skills and competency is, since it's a communication, and we are communicating through media to the larger audience, either we are doing in a small group or larger group or to the entire society or to the nation, all the process involves the transmission of knowledge and information from one point to another point. For example, if you take this television broadcast, where from the studio I am conveying the information about the School of Journalism's academic programs to the audience who are intended to take admission in the university as part of the January 2024. This is what always happens here. The information needs to be transmitted. How do we transmit the information? Of course, there are technicalities involved. But as a person, we want to convey to the larger audience, the primary condition is we should have a clear command over the language. That is the writing is very, very crucial. And for that, language is one issue, language is one requirement. But other than that, once you are master in language, doesn't mean that you are very effective in communicating all the required information. You need to know many aspects of that. For whom you are communicating, what is their profile, and what intended reaction you are expecting. So all this you have to take in care and convey the messages to the audience. This is a skill. It looks like a very simple writing, it looks like a very simple, but it's a very complex process. The success in the complex process based on your understanding of the medium and your understanding of your audience and your expectation and being transmitted properly through your messages. So that's very crucial. So writing is one of the requirement across all the activities of communication spectrum. Either you're writing a news story for newspaper, magazines, or you're writing a script for radio program or television program or film sequences, or you are writing copies or script or news for online platform or including social media. So the writing is very crucial. That is the fundamental component of many academic programs related to media and communication. This is very crucial. Secondly, the crafting and from where this information needs to be collected, the basic tenets, basic characteristics of journalistic practices. So that is one of the important requirement as part of the academic program in media studies. So communication, understanding communication and journalistic practices, one. Journalistic practices, the foundation is same. Foundation is same in the sense how do we collect the information from diverse sources, be it for normal political reporting or crime or city or education or health, environment. There are specific areas. As a journalist, we might need to cover wide variety of topics, but we may not have the in-depth knowledge about all. So that's why we have to connect with the concerned sources, reliable sources, experts. So that makes your story, your argument, your disseminations more authentic, more valuable. And people tend to accept those information which are backed by experts' opinion. So these are the techniques of reporting, and it might vary from discipline to discipline, in the sense education to climate change or political reporting or crime reporting.
And the same time, it might vary from the platform to platform. For example, newspapers works in 24 into 7 cycle, in the sense one newspaper released in today's morning, next will come next day morning only. You have enough time, and there are specific deadlines for covering newspaper stories. And newspapers heavily rely on the text-based description and supported by photographs, mostly text-based. So here the language is a very crucial part, whatever the language you prefer to work. And in case you are planning to work in electronic media-based journalistic practices, there the deadlines are different. In radios, every 1 hour they broadcast bulletins. If it is a television, they have a fixed schedule of round the clock they'll do it, and if it's a major story, they'll go for live. So there the style of functioning is little different from the newspapers. Magazines, on the other hand, is different, where the deadlines might be based on the periodicity, whether weekly or fortnightly or monthly. Accordingly, the deadlines differs, but they go in depth. Newspapers, event, they will cover within the 300 to 400 words and a couple of quotations from the reliable sources and some little bit of background information. But because if a major story, and every day they might carry, or in a different sections they may have a different stories on the similar event. But a magazine, they'll go one topic, couple of topics, but they'll go deeper and might be a little extensively they write, and they take a different format. Magazine writing is different from newspaper writing, and because their audience will have more time to read magazines during the travel or weekend or leisure time, whereas a newspaper always say that journalism is in a hurry actually. So that style of functioning is different. So radio, television functions are different, but primarily all depends upon how you are able to package all your information in a very logical manner, simple manner, and convey it in a very straight format. And understanding the platform is an additional advantage. Understanding platform in the sense radio or television or newspaper or magazine. So the characteristics and how you are conveying to the audience. So this is the different journalistic practices. Writing and editing procedures are part of the programs. And the two more important point I'll explain to you. After that, I'll take you to all the master's degree program of SOJNMS. The two more components is, I told you that the communication is very crucial, and journalistic practices in different platforms. The other important point is understanding the relationship between media and society. This is very, very crucial. And newspapers or all the mainstream media or all the media outlets, they have specific roles and responsibilities. Roles are very clearly defined. There are three roles: information providing and educating the mass and entertaining their audience. So information, education, and entertainment, these are the primary three roles of any media outlets. Some of them might be using all the three. Some of them they'll stick to only one. For example, film, they'll go specifically to entertainment. Newspaper, specifically they'll go for information. The television, they might take all the formats together in different programs. So that is a style of the newspaper's roles. Responsibilities are different from roles. Responsibility sense, you are informing, you are educating, you are entertaining. For what? Is it for certain change, or is it for the welfare of the society, or welfare of the government policies, or taking care about the human settlement? There are many parts involved in the responsibilities. And that is a crucial, because it is not a routine. We are not just kind of passing the information from one place to another place. Event happened, we are collecting information, we are passing on to audience. This is not, we are not doing mechanical work in a main communication system, but we are doing with certain purposes. That's called responsibility. Social responsibility includes many, and two I can tell you that one is a gatekeeping process, another one is a watchdog. Gatekeeping is the process, means as a media house or media professionals, they tend to receive a lot of information.
And but what is required for the society, what is required for your audience, you have to stop many of the information and pass on certain information. So that's called gatekeeping. Another one is a watchdog. Watchdog in the sense, media is considered to be a fourth pillar of democracy. Apart from parliament and executives and judiciary, the fourth is a media system. Watchdog in the sense they are representing, like the parliament members are representing people. Similarly, media represents the people, and they are watching the performance of representatives. So that's why they call it a watchdog. Performance of public institutions, performance of the government agencies, multinational agencies, social institutions. So this is the role of media. That's part of the responsibility. So these are the broad characteristics of media system, and accordingly the trainings are provided. So let me go through the master's level program available with the School of Journalism and New Media Studies, specifically related to journalism and new media, journalism and mass communication, and journalism and electronic media. So these are the areas. And School of Journalism offering 4 master's degree program. Masters in MA in Journalism and Mass Communication, MA in Journalism and Digital Media, MA in Journalism and Electronic Media, MA in Development Journalism. These are the 4 master's degree program offered by School of Journalism as part of January 2024 admission cycle. So it depends upon your interest area. You can go any specific academic program of your choice. For example, I'll go through the specific details of individual master's degree. One is the flagship program of School of Journalism is MA Journalism and Mass Communication. It's quite popular because this is a little popular. The program is available across many universities and colleges. Similarly, the School of Journalism of IGNOU also offers this program. It's a 2 years master's degree program, and as university follows the standard flexibility parameters, that you have another 2 years of time to complete that. In case you want to complete within 2 years, you can do it. For certain reason you want to extend it, you can appear the exam later. So you can take 4 years to complete the entire master's degree program. The age, there is no age limit. You need to have a bachelor's degree, and maximum minimum no age bar, and any age group student can join this program, provided you have to have a bachelor's degree program from approved university or college. Primarily, the eligibility condition is a bachelor's degree, but you should have access to computer, internet, and basic knowledge about word processing, because many of our activities, academic activity, requires the computer usage in terms of completing assignments, practicals, and portfolios. And specific details about this program is, this program, MA in Journalism and Mass Communication, offered in 2 modes. One is the distance mode, one is the online mode. The distance mode, MAJMC distance mode, offered through various study centers across the country. And there are 2 different websites, one for distance mode, one for online mode. So once you go to the university website, you can see the 2 different links for that. Distance mode, the sense you will be attached with the one study center close to your hometown, where all their academic transaction happens with that center. For example, counseling sessions, interaction with the counselors, assignment submission, evaluation, vivavos, portfolio submission, all these activities happens through your study center. And whereas in online mode, we have the dedicated LMS, learning management system, where we have you can access all the academic materials, as well as you can submit the assignments through online, evaluation happens through online, and all the portfolios, Viva, everything managed through the LMS, learning management system. You don't have to go anywhere with your computer, with your laptop. You can transact all your teaching learning process. In the distance mode, you have to interact with your study center. In the online mode, you have to do everything through online,
through a learning management system. So that's a difference. So this particular program, MA Journalism and Mass Communication, is available in a distance mode as well as in an online mode. Advantage of the online mode is, in case you are away from main city, are unable to travel, or unable to find time in visiting study centers, you have plenty of time to work in an online field, then you can go for online mode and you can complete all the activities accordingly there. Whereas in a distance mode, you will interact with the study center mode. This is the two differences of MA-JMC. But another important information is this particular program, MA Journalism and Mass Communication, are available in 3 languages. It was launched in English in 2020. Later, it was extended to 2 more languages. So particularly this program is available in 3 languages: English, Hindi and Tamil. If you are opting for distance mode in any particular language, Hindi, you will get all the materials in a Hindi medium, means books written in Hindi, and you can, assignments are provided in Hindi, question papers in exam provided in Hindi, you can write exam in Hindi. All your transaction with the program is based on the particular language. Similarly, English and Tamil. Same case is the online, where the materials are available, assignments are available, and you have to do your assignments according to the whatever language you are choosing there. Even otherwise also, if you have taken English as a medium of instruction, as per the university policy, you can write exam or assignments in either in English or Hindi. So that is allowed. So this is the whole information about the master degree in journalism and mass communication. We have another program called MA in Journalism and Electronic Media. This is a recently launched program. In 2023 January, we have launched this MA. This is the characteristics are more or less same. Minimum duration, maximum duration 2 years and 4 years. Eligibility is a bachelor degree in any subject. The interesting point here is the program focuses on specific area of electronic media and journalism. Electronic media and journalism covers in the first year. They have introduction to journalism, mass communication, reporting techniques, writing, editing, and broadcast journalism, media and society, and media ethics and laws. These are the courses of first year. Along with that, there are 2 practical courses. Second year course is about audio production, digital media, communication research methods, digital photography and videography, audio visual production, and project work in electronic media, and research dissertations. These are the specialized area. The first year you will learn the basics of the journalistic practices and its other related skills and competencies. In the second year, you will go specifically about the particular electronic media areas like audio, video, theoretical component, as well as the project and a research. So this is about electronic media. And then we have another specialized master degree called MA in Journalism and Digital Media. Here the duration is same, 2 years, maximum 4 years. The fee structure is 10,000 per year, and the eligibility is bachelor degree in any subject. And like electronic media, here we are talking specifically about the digital media. You know the importance of digital media in the contemporary field. The technological adoption, the availability of mobile and internet, and the services provided through the online platform. You know much better what kind of activities we can do it through either handheld mobile or with a computer. Many things can be done. A lot of activities nowadays, our day-to-day activities are interlinked with the online field. This is one aspect of that. Secondly, there is a substantial career opportunity in digital media, whereas in the mainstream media, the activities are linked with the main disciplines like a newspaper, magazine, radio, television, film,
and everything. Whereas in online, it's, again, all these traditional mainstream media, they have outlets in online. This is one aspect of digital media. Other than that, digital media is being incorporated or used by all the stakeholders, all the institutions, being a political party or government department, public sector, corporates, NGOs, or individuals, celebrities. You name that, they have specific activities either through websites or through social media accounts or through other intermediary agencies. So they need, other than the information, education, entertainment component, the digital skill provides a lot of additional opportunity to explore career in different areas. For example, might be interested to work with a corporate communication group of big agencies to deal with the social media promotions, or can be part of the auto industry about promoting their products through online, either through websites or through social media. So name the industry, they have a unit in a digital media component. So this is one advantage. The career opportunity expands a little larger in terms of opportunities in a different sector. So this is part of the digital media platform. And here in this program, you will learn a lot about digital media. For example, understanding digital media, online journalism, digital journalism, practical, and media ethics and laws, mobile journalism, and internet theories, internet research methods, and ICT for development, and research project in the online, data mining, data analysis, big data, and using different tools to do online research. There are many aspects of that, and digital media literacy and media literacy. So these are all areas are being covered in the journalism and digital media program. Next, the fourth master degree through the school is master degree in development journalism. This is one of the crucial area. I was talking about in the beginning about the role and responsibility of the media. Role are information, education, and entertainment, but whereas responsibilities, the media needs to fulfill certain responsibility for the society. What are the areas? Of course, media can't provide the roads or water connections or to safeguard the environment or to provide the better health facility. That they can't do it. Media can't do that. But media can provide the platform for the better dialogue. Because all these areas needs a different coordination. It's not environmental, safeguarding the environment, climate change and all. It's not a one person's responsibility. It's not a one village responsibility. It's a collective responsibility of many stakeholders. How do we connect all the stakeholders? Every stakeholder might play a different role. So somebody has to share the dialogue among all the stakeholders to distribute the responsibility, to take care of the loopholes, and to play an active role participating in this social engagements, civic engagements, and political engagement. These are the dimension of development journalism. Media provides as a platform of dialogue between many stakeholders, between the stakeholders, among the stakeholders, to arrive certain kind of solution, to have a policy, strategies, to figure out the individual's responsibility for the larger society. So these are the nuance of masters in MA in development journalism. And here the same, the minimum duration is 2 and maximum is 4 years, the course fee is 10,000 and bachelor degree in any subject. And here you will study more about the development communication, development support communication, and ICT for development, communication theories in development, health journalism, environmental journalism, ICT for development in an extended format, and role of media in a rural development and urban development, and a project. So these are the areas of masters in development journalism. There are 4 master's degree, and we are talking about the specific details. As per your interest, as per your choice, you can go for any specific master degree program.
let's take a break now, and we'll come back. We'll introduce more about postgraduate diploma, bachelor's degree, and certificate program offered by School of Journalism and New Media Studies. Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study IGNOU offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio, ब्रेक के बाद आप जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। इसके पहले सेक्शन में आपने जितने स्कूल की तरफ से मास्टर्स प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद दूसरे इस सेशन में हम लोग जितने पीजी डिप्लोमा हमारे पास संचालित हो रहे हैं स्कूल की तरफ से,
उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। एक बात। दूसरी बात कि अभी जनवरी 2024 सत्र के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, वो इस बात को लेकर के है कि हमारे स्कूल की तरफ से, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज़ की तरफ से कौन कौन से प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं और इसमें एडमिशन प्रोसेस के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस प्रोग्राम की फ़ी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है और इसके मीडियम क्या है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे हम लोग बातचीत करेंगे। इन केस आपको इस दौरान अगले आधे घंटे तक किसी भी विषय के बारे में, किसी भी प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी तो जो नंबर आपको डिस्प्ले किए गए हैं, बताए गए हैं, आप उस पर कॉल करके हम दोनों फैकल्टी मेंबर से आप बातचीत कर सकते हैं। तो पहले वाले सेशन में सारे मास्टर्स प्रोग्राम को प्रोड्यूस, अभी डिप्लोमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। यह 36 क्रेडिट का प्रोग्राम है और यह प्रोग्राम 1 ईयर का है, मिनिमम 1 ईयर का ये ड्यूरेशन का प्रोग्राम है। लेकिन किसी वजह से आप इस प्रोग्राम को 1 साल में नहीं कर पाते हैं तो आपके पास 3 साल के और चांस मिलते हैं। यह इग्नू का फ्लेक्सिबल एजुकेशन मॉडल है जो किसी भी प्रोग्राम के बारे में एक मिनिमम ड्यूरेशन और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जाता है। और यह प्रोग्राम अभी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है और ये प्रोग्राम आप इंग्लिश में तो करेंगे ही, लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और एग्जामिनेशन हिंदी में देना पसंद करेंगे तो यह सुविधा इग्नू देता है। आप प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद हिंदी मीडियम में ये तीनों ऑप्शन ले सकते हैं, कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यह प्रोग्राम चूँकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के एरिया का है, इसलिए इस प्रोग्राम में वो छात्र ज़्यादा आकर्षित होते हैं और आते हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो डेवलपमेंट एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं या किसी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम में आते हैं। और इस प्रोग्राम को बनाते समय हम लोगों ने फोकस किया था कि यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ, यूएनडीपी, इनका जो प्रोफेशनल फीचर है उसको ध्यान में रख करके, उनके ह्यूमन रिसोर्स के स्किल्स को ध्यान में रख करके इस प्रोग्राम को हम लोगों ने डेवलप किया है। प्लस जो सरकार है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनके यहाँ जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसको ध्यान में रख करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। और तीसरा, एनजीओ सेक्टर में जो भी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतों और उनको किस तरह के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है उनको ध्यान में रख करके इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया है। एक बात। दूसरी बात कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें आते हैं तो किस तरह के लोगों को लिए यह प्रोग्राम ठीक है। एक तो फ्रेश स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जो डेवलपमेंट एजेंसियों के साथ एसोसिएटेड हैं, अगर उनको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में डिप्लोमा प्रोग्राम चाहिए तो वो आ सकते हैं। तीसरा, जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल में 2 तरह के हैं, एक इंडस्ट्री और दूसरा एकेडमिक। तो अगर इन दोनों क्षेत्रों से अगर कोई इस प्रोग्राम को करना चाहता है तो वो कर सकता है। और इस प्रोग्राम को करने के बाद या आप इस प्रोग्राम को करके किस तरह का आपका स्किल्स डेवलप होते हैं, तो इसमें 5-7 चीज़ें तो बहुत क्लियर है। एक तो ये कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेहतर होती है और वो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है उसमें, और स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन या इस एरिया में कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है या किस तरह कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में आप जानेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा, रिसर्च की स्किल, चूँकि मास्टर प्रोग्राम के समय आपको बताया गया है कि इस प्रोग्राम में रिसर्च को ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया है, डिप्लोमा में भी और मास्टर्स प्रोग्राम में भी। तो एक रिसर्च स्किल्स आपको डेवलप होती है। दूसरा, जब आप डेवलपमेंट सेक्टर की कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क करते हैं
तो पॉलिसी मेकिंग की स्किल्स भी इसमें पढ़ाई जाती है और वो आपका स्किल्स डेवलप होता है। उसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क के बाद दूसरा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप करते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो स्किल्स में है। उसके बाद प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है या उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, उसका इवैल्यूएशन कैसा होता है, कैसे होता है। तो ये रिसर्च कम्युनिकेशन से लेकर के आपको रिसर्च स्किल्स, प्लानिंग, फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, ये सारे के सारे स्किल्स आपको इसमें इन्हांस होते हैं, जो इस प्रोग्राम के पार्ट है, जो इसका फीचर है। इसके अलावा ये पूरा आपका पीजी डिप्लोमा एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में हमने बातचीत की। और इसके अलावा अगर आप ये डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा लेते हैं तो आपके लिए जिन एरिया के बारे में हमने बात किया कि डेवलपमेंट सेक्टर के जो एरिया है, चाहे वो एनजीओ जिसको कोऑर्डिनेट कर रहा हो या जिसमें इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्व हैं या जो डेवलपमेंट वर्क कर रही हैं सरकारें, और उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसियां, जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपको यूनाइटेड नेशन और उसके जो ब्रांचेस हैं, जो उसके अंदर में जो एजेंसियां काम करती हैं, उन एरिया में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और इसके साथ मीडिया इंडस्ट्री है, जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म के एरिया में भी आपका एक कैरियर बनता है। तो अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में जाते हैं तो डेवलपमेंट सेक्टर या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट एरिया को जो भी कंसर्न एजेंसियां हैं या इंस्टीट्यूशंस है, वो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग के लिए उसमें आपको अच्छा समझ सकती हैं, प्रोफेशनल समझ सकती हैं। और इसके अलावा आप मीडिया एकेडमिक में भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में टीचिंग होती है, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो ये रहा पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। और इसके बारे में यदि कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इग्नू के वेबसाइट पर जा करके, और वहाँ इग्नू की वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इससे डिटेल आप देख सकते हैं, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्रोग्राम के बाकी जो फीचर हैं उसके बारे में देख सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, इस प्रोग्राम के बारे में भी आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एडमिशन से रिलेटेड, वो ये है कि इसका फ़ी भी 10,000 है और यह इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम अवेलेबल है। और तीसरी बात कि इसमें कोई एज बार नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यह प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन आप इसका एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट तीनों हिंदी में भी दे सकते हैं, ये ऑप्शन है। और यह प्रोग्राम अभी आज के डेट में ऑनलाइन में भी उपलब्ध है और ओडीएल में भी उपलब्ध है, दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप जहाँ कहीं भी इच्छा हो आपकी, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ओडीएल से करना चाहते हैं तो ओडीएल से कर सकते हैं। और डिजिटल मीडिया के बारे में तो आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों से आप देखेंगे कि डिजिटल फीचर को या डिजिटल मीडियम को या डिजिटल मीडिया को या डिजिटल मार्केटिंग को या डिजिटल गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बैंकिंग से लेकर एजुकेशन से लेकर गवर्नेंस और गवर्नमेंट तक सब सेक्टर में आपको डिजिटल मीडिया का इम्पोर्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया का जो एक सपना है या जो विज़न है उसको फुलफिल करता है। और जो भी स्टूडेंट डिजिटल मीडिया प्रोग्राम, ये डिप्लोमा प्रोग्राम भी है और इसका एमए प्रोग्राम भी है, जिसके बारे में फर्स्ट सेशन में आपको बताया गया है। तो इन दोनों प्रोग्राम में एमए इन डिजिटल मीडिया और सेकेंड एमए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, इन दोनों में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो डिजिटल मीडिया सेक्टर में जो भी करियर के अवसर हैं वहाँ आप करियर बना सकते हैं। और सेम यहाँ भी आप चाहें तो चाहे मीडिया इंडस्ट्री में करियर बनाने चाहें या गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा डिजिटल रिफॉर्म हो रहे हैं, वहाँ भी प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर के दृष्टिकोण से। या फिर मीडिया इंडस्ट्री के अलावा मीडिया एजुकेशन में भी जो डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो भारत सरकार का जो सपना है
डिजिटल इंडिया का जो सपना है, या डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल पूरे ग्लोबलाइजेशन को आप देखेंगे या ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो न्यू मीडिया या इंटरनेट या डिजिटल मीडिया जिस तरह से सोसाइटी में या ह्यूमन के अंदर एक तरह से जो स्पेस बनाई है, वो एक तरह का हम लोग कहते हैं उसको कि सांस की तरह आपको इंटरनेट और मीडिया की ज़रूरत आज के डेट में पड़ रही है। और जब सारे के सारे मीडियम मोबाइल कम्युनिकेशन और मोबाइल मीडियम के फॉर्मेट में उपलब्ध हो रहे हैं, यानी आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में पूरी आपकी दुनिया है और उस मोबाइल की दुनिया में मीडिया है और मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। तो ये जो इस प्रोग्राम का जो कंपोनेंट है, जो नेचर है, जो फीचर है, वो डिजिटल बेस है, इसलिए ये प्रोग्राम वो काफ़ी छात्र सराह रहे हैं। और इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके जितना हम लोग यहाँ बता रहे हैं, इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा कर के वहाँ देख सकते हैं। और इस दौरान जब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। अगला प्रोग्राम है पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, यह रेडियो बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें भी ग्रेजुएट लेवल के जो डिसिप्लिन ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यह प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यह काफ़ी पुराना प्रोग्राम है और इग्नू का, और काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी चर्चित प्रोग्राम है। तो जो लोग रेडियो के सेक्टर में, रेडियो अपने आप में एक बड़ी विधा है और ख़ास तौर से ऑल इंडिया रेडियो और उसके बाद जो कमर्शियल रेडियो आए हैं, एफएम रेडियो आए हैं, जो एजुकेशनल रेडियो हैं, इन तीनों एरिया में रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और अब तो रेडियो में इस तरह के रिफॉर्म हुए हैं, रिवोल्यूशन हुए हैं कि हर कोई रेडियो के प्रोग्राम को देखकर बहुत आकर्षित हो रहा है। और ख़ास तौर से रेडियो का जो एक्सेस है, जो विस्तार है, जो पहुंच है, वो इतना ज़्यादा है कि सबके पास, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मोबाइल की बात कर रहे थे, तो मोबाइल की तरह ही और भी जो आप पहले जैसा नहीं है कि आप के पास यदि रेडियो है तभी आप रेडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं। या रेडियो प्रोग्राम आज के डेट में मोबाइल पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, आप चलते फिरते एक सुन सकते हैं और आपके रेडियो पर तो है ही। और उसके बाद भी दूसरे जो मीडियम हैं उसके, अगर आप कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रोड में हैं, ट्रैफिक में हैं, तब भी रेडियो को आप सुन रहे हैं। तो एजुकेशनल रेडियो के पर्पज़ से देखा जाए या प्रोफेशनल रेडियो के पर्पज़ से देखा जाए या आप इसमें करियर बनाने के एंगल से देख रहे हैं, तो ये सब जितने भी इसमें प्रोग्राम में विविधता है, जो इसका फीचर है, जो इसकी ज़रूरतें हैं, वो बहुआयामी हैं। तो आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन। इसके अलावा और किस प्रोग्राम के बारे में सर? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. This is a one-year diploma program, like audio program, as Dr. Ramesh Yadav was mentioning. This also our university's oldest program. It was initially launched in 1996 and later it was revised in 2020, and it's being offered in both online as well as in a distance mode. As well as available in 3 multiple languages: English, Hindi and Tamil. These are the 3 languages one, and it's a generic program. Bachelor degree is required and no age bar, and 12,800 is a course fee. Particularly this diploma useful for the students who are wants to take a short-term training, and in addition to the any other existing program if they want to pursue. For example, PG diploma in journalism and PG diploma in political science. If we the MA political science, if we do that, that gives added advantage if you want to specialize in the political communication and the similar areas. This is one advantage, as well as this PG diploma, if you do it now, later after some time you want to convert it to master degree,
So same school, we have the PG diploma in journalism and we have MA journalism and mass communication. With this diploma, you can come to second year through lateral entry. And similarly, somebody joined MA-JMC, MA Journalism and Mass Communication program, for whatever reasons, or they are unable to pursue second year, they can leave the first year with a diploma. So one MA, if they leave first year, you will get the diploma. With the diploma in standalone, you can come back to MA second year as a lateral entry. So the university follows a flexibility and convenience in the teaching learning process. This is the one advantage. You can take a program independently, and later you can combine with the MA through lateral entry, you can get the master degree. So this is, but you can take a break also in between the two, diploma 1 year and 1 year gap, then you can go to second year after third year. So all depends upon the individual and their convenience, and availability of time based on which they can pursue that program. Similarly, it's available in a multiple mode, and this is available from already available, and it's part of the 2024 January admission process. सर, इसके अलावा 2 डिप्लोमा प्रोग्राम और हैं, एक पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके मास्टर प्रोग्राम के बारे में पहले सेशन में आपको बताया जा चुका है। यह डिप्लोमा 1 ईयर का है, लेकिन जो हमने बार बार बता रहे हैं हम लोग कि इग्नू का जो एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन मॉडल है, उसके तहत मिनिमम 1 ईयर में आप इसको कर सकते हैं, मैक्सिमम आपके पास 3 इयर्स का समय दिया जाता है, 3 साल में कभी भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका जो प्रोग्राम फ़ी है 9,500 है, और इसमें भी कोई एज बार नहीं है, और यह प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रोग्राम अभी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, और इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आप उससे अवेयर हैं तो आपके लिए एक सूचना इसके साथ और है कि यदि आप इस डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं, तो आपको पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मिलता है। और यदि आप इसका सेकेंड ईयर प्रोग्राम करना चाहते हैं, मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिसका टाइटल है MA इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो अगर आप मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के MA प्रोग्राम को आपको जो डिग्री मिलेगी MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो आपके लिए यहाँ एग्जिट प्रोग्राम भी है और सेकेंड ईयर में एंट्री का भी ऑप्शन है। तो ये एक सूचना है आपके लिए एडमिशन से एडमिशन प्रोसेस से संबंधित। दूसरा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेलीविज़न जर्नलिज्म से या टीवी न्यूज़ के बारे में आप जानते होंगे, टीवी न्यूज़ को आप देखते भी होंगे। तो टीवी न्यूज़ या टेलीविज़न जर्नलिज्म का अपने आप में एक बड़ा इतना ग्लैमर है कि जो भी जर्नलिस्ट एक बार बनना चाहता है, उसका पहला ख्वाब होता है कि हम टीवी जर्नलिस्ट बने और टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे। तो यह एक बहुत ही ग्लैमर वाला प्रोग्राम है, और जो छात्रों को, युवाओं को बहुत आकर्षित करता है। और ज़्यादातर आज के डेट में, चूँकि पहले टेलीविज़न जर्नलिज्म का जो ब्रॉडकास्टिंग थी सब टेलीविज़न पर ही था, लेकिन आजकल डिजिटल प्रोडक्शन भी हो रहे हैं, डिजिटल कास्टिंग भी हो रही है। तो आप अगर टेलीविज़न जर्नलिज्म के अलावा अगर आप यूट्यूबर हैं या आप कोई और इस तरह के सिटीजन जर्नलिज्म में भी एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं, या टीवी जर्नलिज्म में एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं, तो आजकल इसका नेचर बहुत चेंज हो गया। आपके पास टीवी का ऑप्शन है, दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब या इस तरह के जो चैनल्स हैं वो ऑप्शन है, और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप आप खुद कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेलीविज़न जर्नलिज्म में भी ऑप्शन खुल करके आए हैं सामने। तो आपके रोज़गार के भी तीनों अवसर हैं कि अगर आप सेल्फ चाहें तो सेल्फ इसमें एंटरप्रेन्योरशिप है एक मॉडल जिसमें आप जा सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर के जो रेडियो ब्रॉडकास्ट जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है उसके साथ आप जा सकते हैं, और चाहे आप दूरदर्शन को देख लें या दूरदर्शन से संबंधित जितने भी चैनल्स हैं, और एजुकेशनल चैनल्स भी हैं जहां रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा आपको जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब है,
आज के डेट में तो जब से डिजिटल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल का जो कॉम्बिनेशन बना, उसमें अब कोई भी जर्नलिस्ट बन सकता है और उसके अंदर जो जर्नलिज्म की जो बेसिक क्वालिटी है वो लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे एथिकल्स कंपोनेंट हैं जिसको जानना एक जर्नलिस्ट के लिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हो, चाहे प्रोफेशनल जर्नलिज्म में जाना हो, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इसके फीचर्स हैं, जो स्किल्स है, चाहे राइटिंग को हो, चाहे एडिटिंग को हो, चाहे प्रोडक्शन को हो, वो स्किल्स और प्लस एक इथिक्स वाला जो पार्ट है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से न्यूज़ हम किस फॉर्मेट में बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इससे सामाजिक और मानवीय मुद्दे जुड़े होते हैं जिसमें बहुत सारी सावधानियां भी बरती जाती हैं और बरतनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा बूम आया हुआ है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनियंत्रित हैं, जिसको कि अगर आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से, चाहे डिप्लोमा चाहे डिग्री प्रोग्राम, तो एक व्यवस्थित और जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म है उसको आप कर सकते हैं। तो ये पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जिसका कोड है PGDEME, और इसका मास्टर प्रोग्राम है MA इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये प्रोग्राम है डिप्लोमा प्रोग्राम। इसके अलावा जो हम लोगों का अंतिम डिप्लोमा प्रोग्राम है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। यह एक नया डिप्लोमा प्रोग्राम है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, और जो स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन के क्षेत्र में, पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यह प्रोग्राम जो डिप्लोमा प्रोग्राम है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो प्रोग्राम फी है 4000 रुपीज़ है, और इसमें भी कोई एज बार नहीं है, ना मिनिमम और ना मैक्सिमम। और इसमें एडमिशन के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, और इसका मीडियम इंग्लिश है। और लेकिन इंग्लिश होने के बावजूद आप इसको हिंदी में भी इसका असाइनमेंट, इसका प्रोजेक्ट वर्क और इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यह सुविधा इग्नू की तरफ से दिया जाता है। ये जितने डिप्लोमा प्रोग्राम और जितने मास्टर्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो। यह एक बहुत अच्छा ही प्रोग्राम है, और एक समय में इसको सिमका के सहयोग से संचालित फेलोशिप दिया जाता था, और उसके सहयोग से इसे संचालित किया गया इग्नू में। सामुदायिक रेडियो को लेकर के भारत सरकार और राज्य की सरकारें और ख़ास तौर से जो एनजीओ सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में जो लोग इस रेडियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और भारत सरकार की भी योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समुदायों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए सामुदायिक रेडियो बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है, इसलिए वो इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। और भारत में लाइसेंस जो सिस्टम है रेडियो के लिए, खास तौर से जो सामुदायिक रेडियो हो, 3 सेक्टर में दिया जाता है। एक कृषि विज्ञान केंद्र, और दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और तीसरा एनजीओ को। ये 3 सेक्टर में लाइसेंस दी जाती है। लाइसेंस फी एक तरह से फ्री है, और सरकार इसको प्रमोट करने के लिए फिनेंशियल सपोर्ट भी करती है। तो ये सामुदायिक रेडियो 6 महीना का प्रोग्राम है, और आप इसको कभी भी कर सकते हैं। और सामुदायिक रेडियो में आपको थोड़ा अंतर जानना होगा। यह कमर्शियल रेडियो नहीं है, जो व्यावसायिक रेडियो है उस तरह से ये नहीं है। ये एजुकेशनल, सामुदायिक एजुकेशनल रेडियो भी है, सामुदायिक रेडियो भी है, समुदाय के बीच में काम करता है, और इसका रेडियस जो होता है कवरेज वो 12 से 15 किलोमीटर के रेंज का होता है। तो 12 से 15 किलोमीटर के रेंज में जहाँ कहीं भी ये सामुदायिक रेडियो होगा, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से संबंधित जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो जागरूकता अभियान है, उसमें ज़्यादा ये सहयोगी साबित होता है। प्लस जो वहाँ विकास के मुद्दे हैं या दूसरे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उस प्लेटफॉर्म पे उठाना और सरकार तक पहुँचाना, इसके लिए यह माध्यम बहुत ही उपयोगी है।
अब आज का समय लगभग हो चुका है। मैं अपने स्कूल के निदेशक डायरेक्टर प्रोफेसर के.एस. अरुल सेल्वन जी से मैं कहूँगा कुछ और इनपुट हो तो। Thank you. And along with this, all this diploma and master degree, we have bachelor's also, and it's available in the university portal for details. And we encourage the students to go through the university portal for further details. Schools' contact details are available, mail or mobile number or landline number. So students are advised to contact for further information. Thank you. तो आज ये प्रोग्राम यहाँ समाप्त हो रहा है। जो भी दर्शक हम लोगों के साथ जुड़े थे, आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। School also नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप अपने ही कार्यक्रम जो कि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का है, इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको थोड़ी ही देर में आपके इस जो टीवी स्क्रीन है उसके ऊपर जाएंगे, आपके नंबर फ्लैश हो जाएंगे। आप उन नंबरों के माध्यम से हमसे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और आपको जो भी लगता है कि कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सवाल करने हैं, एडमिशन से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप हमसे जुड़ करके अपनी बात को रख सकते हैं। और हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको एक संतोषजनक उत्तर दिया जाए और आपके सवालों का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं जो भी दर्शक इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। अभी इस प्रोग्राम में हम जो हमारा नया सत्र शुरू हुआ है एडमिशन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको शायद पता है कि यूनिवर्सिटी हमारी इग्नू जो है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस एंड ओपन डिस्टेंस के मोड में एडमिशन्स करवाती हैं। और ये हमारा 2 साइकिल का एडमिशन चलता है। एक जनवरी साइकिल में एडमिशन हम करते हैं और दूसरा जुलाई साइकिल में एडमिशन करते हैं। जुलाई साइकिल जो जुलाई 23 का एडमिशन साइकिल था वो क्लोज हो चुका है और यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2024 के लिए एडमिशन स्टार्ट कर दी है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी रखी गई है। और हम चाहेंगे कि अगर एक बार आप जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का एड्रेस भी बता देते हैं और आपको लिंक भी दिखा देंगे कि कहाँ पे जा कर के आप अपना जो देख सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का एड्रेस www.ignou.ac.in। तो जब यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्टर ऑनलाइन करके लिंक दिया हुआ है। अगर हम पॉसिबल हो तो हम देखते हैं कि अगर आपको दिखा सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो ये देखिए कि यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन करके लिंक आ जाता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया हुआ है, जिसमें एकेडमिक काउंसलर पोर्टल है, एलुमनाई पोर्टल है, फ्रेश एडमिशन जो कि डिस्टेंस मोड में जो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है उनके लिए है, और ऑनलाइन मोड में जो ऑफर कर रही है उनके लिए ये उससे नीचे वाला लिंक है। इसके अलावा हमारा जनवरी में रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोग्राम
जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा है, बच्चे जो हमारे बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री या जिनके भी सेमेस्टर मोड के प्रोग्राम हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए भी लिंक देखिए नीचे दिया हुआ है, और उसके नीचे एग्जामिनेशन, रिवैल्यूएशन, बाकी जो है कन्वोकेशन के, तो ये सब इम्पोर्टेंट जरूरी लिंक दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जो ज़रूरत है, जो सुविधा है, उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि जनवरी 2024 के लिए एडमिशन साइकिल जो है स्टार्ट हो चुका है, फ्रेश एडमिशन और डिस्टेंस मोड में और ऑनलाइन मोड में। तो अगर आपका इंटरेस्ट किस प्रोग्राम में है, डिस्टेंस मोड में जाना चाहते हैं या ऑनलाइन मोड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए ये दोनों लिंक हैं। तो आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि फ्रेश एडमिशन लिंक पे आप देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब जाकर के अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उससे पहले अगर आप न्यू यूज़र हैं, जो पहली बार हमारे यहाँ जुड़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको एज ए न्यू यूज़र सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू यूज़र के लिए देखिए दिया हुआ है लिंक कि आपको यहाँ पे जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जाकर के आप जो अपना इन्फॉर्मेशन भरेंगे, और उसके बाद जो है आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, आपका एक जो आपका मोबाइल नंबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन सब पर्टिकुलर फील्ड को आप जब भरेंगे, उसके बाद आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। जब आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, तो उससे पहले मैं कहूँगा कि आप जो है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं एडमिशन से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे वीडियो भी बना करके रखा हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसको देख करके आप जान सकते हैं कि आपको आगे किस तरह से स्टेप्स फॉलो करने हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया होता है, जिसमें आप पढ़ करके जानेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है एडमिशन करने के टाइम पे, फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। अब लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से हम थोड़ी सी चर्चा उन बातों पे भी कर लेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि एज ए न्यू यूज़र जब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जब आपको एडमिशन लेना होता है, तो पहले आपको एज ए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो जिसके लिए कि आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और आपका एक मोबाइल नंबर ज़रूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, जिसपे कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिनके SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। और उसके पहले मैंने बताया कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, आप मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के साथ में, जब आप यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं और जब पासवर्ड रखते हैं, तो पासवर्ड ऐसा रखें जो कि आपके लिए आसान भी हो और आसानी से कोई उस चीज़ को छेड़छाड़ भी ना कर सके, और कहीं आप इस चीज़ को नोट भी करके रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप भूलें नहीं कि आपने क्या पासवर्ड बनाया है जब आप लॉगिन करने जाते हैं। तो उसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा कि नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, जब आप पर्टिकुलर्स भरते हैं अपने फॉर्म में, तो उसमें आपको आपका नेम पर्टिकुलर्स भरना होता है, एड्रेस भरना होता है, जो और भी डिटेल्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ होते हैं। ये सब पर्टिकुलर्स भरने के बाद जब आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके अलावा आपका पोस्टल एड्रेस भरना, तो इन सब चीज़ों का जब आप भरते हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो भी पर्टिकुलर्स आप भरें या किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं, तो बहुत सावधानी से भरिएगा। और जब आप पूरे फॉर्म भर लेते हैं, तो सबसे लास्ट पे जो होता है एक पेमेंट का आता है लास्ट में, पेमेंट गेटवे के माध्यम से, जो कि फी पेमेंट के लिए होता है। उससे पहले आप व्यू कर सकते हैं कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरा है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी जगह होती है। डॉक्यूमेंट्स की जैसा कि मैं बता रहा था आपको, आपका फोटोग्राफ चाहिए होता है, और आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और अगर कहीं एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो ये सब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए भी डिफरेंट साइजेस स्पेसिफाई किए हुए हैं। आप देखिएगा कि किस किस साइज़ के आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होते हैं, ताकि आप आराम से अपनी चीज़ों को, जब आप फॉर्म भरते समय किसी तरह की आपको दिक्कत और या परेशानी का सामना नहीं करना। तो जब ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो जैसा कि मैं बताया था कि मेल आईडी और जो SMS के लिए जो मोबाइल नंबर आप भरते हैं, उसके माध्यम से आपको SMS आते हैं। मान लीजिए जब फॉर्म आप भर चुके होते हैं, तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं, तो आपको एक कंट्रोल नंबर मिल जाता है आपके फॉर्म का। उस कंट्रोल नंबर को आप कहीं नोट करके भी रख सकते हैं, और ये मैसेज के लिए आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे भी आ जाता है, जिसको आप कहीं न कहीं ध्यान में रखेंगे कि आप उसको डिलीट ना कर दें गलती से भी, क्योंकि कहीं भी जब आप फॉर्म फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
जब एक बार आप फॉर्म भर लेते हैं, जैसा कि मैं बताया, तो उसमें आप सावधानी बरतेंगे, क्योंकि जो मेल एड्रेस या आपका पोस्टल एड्रेस होता है उसके माध्यम से हम जो है कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। पोस्टल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपको किसी तरह की जब कम्युनिकेशन के बीच में ज़रूरत पड़ती है, आपके पास जैसे स्टडी मटेरियल आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है, तो आपके पास स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी के तरफ से भेजी जाती है, जो आपके पोस्टल एड्रेस पे जाती है। अगर आपने एड्रेस गलत रखा है, या तो बाद में भी प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद भी जो मार्कशीट है या डिग्री है आपके पोस्टल एड्रेस पे भेजी जाती हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप पूरी सावधानी रखें चीज़ों को भरने में, और कम से कम आपको परेशानी हो बात के बाद में। तो जैसा मैं कह रहा कि जब एक बार आप सारे पर्टिकुलर्स भर लेते हैं फॉर्म में, सारा जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है, कोर्स सिलेक्शन है, मीडियम है, सारा भरने के बाद में लास्ट में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें कि फ़ोटोग्राफ्स मैंने बताया है, आपके सिग्नेचर के जो है प्रूफ, और जो है डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रिलेटेड है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब एक बार आप अपलोड कर लेते हैं, एक बार आप व्यू भी करके ज़रूर देख लीजिएगा कि जो आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट वो विजिबल है, प्रॉपर है, कहीं कोई गलती से कोई और डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया है, तो ऐसा भी होता है कई बार। तो एक बार आप फाइनल सबमिशन से पहले उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और फिर सबसे लास्ट में जो है फ़ी पेमेंट का आपको करना पड़ता है, जिसके लिए आप कोई भी क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या किसी भी तरह का जो बैंकिंग वेन्यूज अवेलेबल हैं आपके पास में पेमेंट के लिए, उस पोर्टल के माध्यम से आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट के टाइम पे आप एक बात का मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आप सभी का, कि जब आप फ़ी पे करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी आप बैंकिंग डिटेल्स यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या आपका नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो वो आपका अपना हो या आपके किसी संबंधी का हो, ताकि मान लो किसी वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या किसी तरह के रिफंड की बात आती है, बाद में कैंसिलेशन के प्रोसेस में अगर आ जाता है, तो आपका उसी डिटेल्स में जो आपने पर्टिकुलर्स भरे होते हैं बैंकिंग डिटेल्स, उसी डिटेल्स पे वापस पैसे रिफंड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये ऐसा भी कई बार नोटिस में आता है कि जिन्होंने किसी और का क्रेडेंशियल्स यूज़ किया होता है फिर पेमेंट के लिए, या साइबर कैफ़े वालों के साथ जाके वो करते हैं, और पीछे से साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं कि आपका फॉर्म जो है एडमिशन कैंसिल करा देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और जब फिर उनके क्रेडिट में आ जाते हैं और आप परेशान होते रहते हैं कि भाई पैसे हमारे कहाँ गए, एडमिशन भी नहीं हुआ और फिर भी हमारे से ले लिया गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोशिश यही करिए कि जो भी आप पर्टिकुलर्स यूज़ करते हैं, जो भी डिटेल्स आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, और उसको ट्रैक करने की कोशिश कीजिए बार बार, ताकि किसी तरह की गलती ना हो। इसी तरह जो मैंने अभी डिस्टेंस मोड के लिए बताया, उसी तरह से ऑनलाइन का भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनमें भी जो चूँकि नंबर लिमिटेड होते हैं ऑनलाइन, तो आप देख लीजिएगा कि किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन है ऑनलाइन में, तो उसको भी आप देख करके फिर जिस तरह से प्रोसेस ओडीएल वाले मोड के लिए प्रोग्राम्स के लिए, उसी तरह से आपको उसके लिए भी फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। अंतर दोनों में ये होता है कि आपको स्टडी सेंटर पे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, एकेडमिक काउंसिल, इन सब चीज़ों की सुविधाएँ जो हैं ऑनलाइन और जो ओडीएल में थोड़ी सी अंतर होती हैं, तो उस बात का ध्यान रखा जाता है। तो आप जैसा भी आपको सुविधा लगे उसके हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे कि आपको किस मीडियम में पढ़ाई करनी है और कौन सा मोड आपको अपनाना है, ऑनलाइन मोड में जाना है या डिस्टेंस मोड में आना है। इसके अलावा मैं दो एक चीज़ और चर्चा करना चाहूँगा, चूँकि अभी एडमिशन की बात हमने शुरू की है, तो अभी जो है जनवरी सत्र के लिए जो मैं बता रहा था कि एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। इसमें बहुत तरह के प्रोग्राम्स ऑफर में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री के प्रोग्राम है। तो आप देख लीजिएगा, एक प्रोस्पेक्टस भी हमारे वेबसाइट पे होगा, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले, ताकि आपको पता रहे कि प्रोग्राम में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें किस किस तरह की और भी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करने पर जब आप एक बार प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो आपको उस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स मालूम हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने शुरुआत की कि एडमिशन हमारे 2 साइकिल में होते हैं, जनवरी साइकिल और जुलाई साइकिल। उसी तरह से हमारा जो एग्जामिनेशन होता है साल में, वो भी 2 साइकिल में 2 सेशन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक दिसंबर टर्मिनल एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो है जून टर्मिनल एग्जामिनेशन। इसके बीच में जो है आपका हर कोर्स के साथ में जो कहते हैं कि जो भी प्रोग्राम आपने एडमिशन लिया है
उसमें हर कोर्स के साथ में आपके असाइनमेंट्स या किसी कोर्स में प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और टाइमली एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर भर दीजिए एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप एग्जाम में अपीयर हो सकें। चूँकि इग्नू जो है एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो क्वालिटी जो बेंचमार्क कह सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसके लिए जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स हैं। अगर आपने ओडीएल माध्यम में सॉफ्ट कॉपी नहीं चूज़ की है, तब आपको ये स्टडी मटेरियल्स आपके पोस्टल एड्रेस पे भेजे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे सॉफ्ट कॉपीज हैं अवेलेबल हैं, जो कि ई ज्ञान कोश एक है एड्रेस, आप चाहें तो वेबसाइट पे उसे सर्च कर सकते हैं, ई ज्ञान कोश। वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स की सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं और कहीं भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप है हमारा, ई कंटेंट मोबाइल ऐप करके इग्नू का, उसके माध्यम से भी आप सॉफ्ट कॉपी जो है स्टडी मटेरियल्स की अवेलेबल है और आप उसे एक्सेस करके कर सकते हैं। ये तो रही स्टडी मटेरियल्स की बात। इसके अलावा जो इवैल्यूएशन हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन भी एक ज़रूरी कंपोनेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी पढ़ाई को करने के लिए। तो इवैल्यूएशन के लिए एक कह लें कि हमारे तरफ से जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो किया गया है कि जो आपके स्टडी मटेरियल्स है उसमें ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला तो आप जब पढ़ते हैं स्टडी मटेरियल्स को और उसे हल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलता है कि आप उसमें कितना पढ़ पाए हैं और कितना समझ पाए हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया कि असाइनमेंट्स होते हैं जो हर कोर्स में कंपलसरी है। तो असाइनमेंट्स आपको सत्र से एग्जामिनेशन से पहले करना होता है। अगर आपने मान लीजिए किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में मान लीजिए जनवरी में एडमिशन लिया है, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम जनरली 6 महीने का कोर्स होता है। और अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जामिनेशन जून में होना है। उससे पहले आपको मार्च के आसपास में, फरवरी मार्च में, अप्रैल में अपने जो है असाइनमेंट्स हैं वो जो आपके कोर्स से संबंधित होगी, जो प्रोग्राम से संबंधित होगी, उन असाइनमेंट्स को आपको पूरा करके कंप्लीट करके आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करना पड़ता है। असाइनमेंट्स बनाने के टाइम पे आप कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो है असाइनमेंट्स अपने शब्दों में बनाइएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा, प्लेन पेपर पे हैंड रिटन होना चाहिए। असाइनमेंट जमा करने के पहले ये देख लीजिएगा कि अगर 3-4 कोर्सेज किसी प्रोग्राम में हैं तो असाइनमेंट्स जो हैं सारे चारों कोर्सेज के अलग अलग हों, ना कि एक साथ आपने स्टेपल या बाइंडिंग करके दिया हो। तो अलग अलग चूँकि टीचर्स पढ़ाते हैं कोर्सेज को, तो ताकि वो जो भी टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग टीचर्स अपने अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ बाइंड कर दिया तो हो सकता है सारे असाइनमेंट्स एक ही टीचर के पास चले जाएं, जो कि सारे एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। तो असाइनमेंट जमा करने के टाइम पे इस बात का ध्यान रखिए कि सारे असाइनमेंट्स आपके अलग अलग हों। सारे असाइनमेंट्स के ऊपर कवर पेज जो कहते हैं उसके ऊपर आपका नाम लिखा हो, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हो, प्रोग्राम लिखा हो और कोर्स को जरूर लिखा हो। साथ ही साथ अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको असाइनमेंट्स अगर कलेक्ट करना हो या स्टडी सेंटर के माध्यम से भेजा जाता है बाई पोस्ट भी, तो आपको वो एग्जामिनेशन से पहले मिल जाए। असाइनमेंट्स का पर्पस ये होता है कि आपका एक सेल्फ असेसमेंट हो जाता है कि आप कितना पढ़ पाए हैं सब्जेक्ट्स को, कितना समझ पाए हैं और कितना आपने उसको एक जो एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस करने की बात होती है तो आप कितना उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं असाइनमेंट्स को। तो असाइनमेंट्स इसलिए भी कंपलसरी कहते हैं क्योंकि इसका जो वेटेज होता है आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में ऐड होता है। असाइनमेंट्स का वेटेज डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम 25% या 30% होता है, और जो टर्म एग्जामिनेशन में बता रहा हूँ उस कोर्स के लिए उसका वेटेज 75% या 70% वो प्रोग्राम के हिसाब से वेरी करता है। तो दोनों मिलाकर के जो हम इवैल्यूएशन करते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कि असेसमेंट आपका एग्जामिनेशन और असाइनमेंट दोनों मिला के कोर्स कंप्लीट करना होता है, तभी आप किसी प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाते हैं। अगर आपने पूरे कंपोनेंट को, दोनों कंपोनेंट को नहीं किया है, जब तक आपका असाइनमेंट्स और एग्जामिनेशन दोनों कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिए कि दोनों के अपने इंडिपेंडेंट मार्क्स होते हैं, अपने इंडिपेंडेंट वेटेज होते हैं, इसलिए आपको दोनों को इंडिविजुअली भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स भी हैं, जिसमें कि अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आपने अटेंडेंस फुलफिल नहीं की है, जिसमें रिक्वायरमेंट है 75% अटेंडेंस की,
तो आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में अपीयर नहीं होने दिया जाए, इस बात का ध्यान रखिए। खासकर BCM से या BSc या इस तरह के और भी जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स हैं जो कि कंपलसरी हैं, आपको अटेंडेंस कंपलसरी बनाना है, आपको अटेंड करने हैं सारे लैब या प्रैक्टिकल, तभी आप उसको समझ पाएंगे और तभी आप एग्ज़ाम में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। एग्जामिनेशन से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको असाइनमेंट्स बनाना ज़रूरी है। असाइनमेंट्स बनाने के साथ साथ जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरते हैं उसमें आपका डिक्लेरेशन भी होता है कि आपने असाइनमेंट्स अपने जमा कर रखे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, जैसा कि मैं जस्ट एग्जांपल के लिए सर्टिफिकेट की बात कर रहा था। सर्टिफिकेट प्रोग्राम में 6 मंथ्स का ड्यूरेशन मिनिमम होता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 साल का होता है। तो अगर आप मान लीजिए किसी वजह से 6 महीने में उस प्रोग्राम को, उस कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 2 साल में उसे कर सकते हैं। उस बीच में आपको असाइनमेंट्स कम करने हैं, एग्जामिनेशन करने हैं, मतलब कहने का मतलब जो भी रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उसे पूरा करना है, तभी आप उस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से मास्टर डिग्री के प्रोग्राम हैं जिसमें कि आपके मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल होते हैं और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल होते हैं, जिसमें आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि री रजिस्ट्रेशन जो सेकेंड ईयर का उसे भी आप कराना नहीं भूलिएगा। इसी तरह से मतलब बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या जो भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम भी हैं जिसमें कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन है, उसका भी आप ध्यान रखिए कि मान लिया ऐसा नहीं कि आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो फिर नेक्स्ट जो सेमेस्टर है या नेक्स्ट ईयर जब आपका ड्यू है रजिस्ट्रेशन तो आप मिस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है नेक्स्ट कंप्लीट करने का कॉम्पोनेंट वो टाइम बढ़ जाएगा। आप एग्जामिनेशन के रिजल्ट का नहीं वेट कीजिएगा, टाइमली आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अभी फ्रेश एडमिशन जनवरी 2024 का चल रहा है, साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है 2024 के लिए जनवरी का। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस साइकिल के रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपने प्रोग्राम्स के लिए और जो एलिजिबल हैं वो रजिस्ट्रेशन भी जरूर कर लेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन के बारे में बताया कि किसी प्रोग्राम में मिनिमम ड्यूरेशन होता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, जैसा कि मैंने जिक्र किया सर्टिफिकेट और मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में। तो इस जो मिनिमम ड्यूरेशन का कहने का मतलब होता है कि मिनिमम, जैसे मैंने बताया कि 6 महीने सर्टिफिकेट के लिए होता है, मास्टर डिग्री के लिए 2 साल होता है। तो इस मिनिमम ड्यूरेशन में आप चाहें तो अपने सारे कंपोनेंट को इंक्लूडिंग री रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, सारी चीज़ें कंप्लीट करके वो मिनिमम टाइम पे आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से मान लीजिए कोई हादसा हो जाए या किसी तरह की डिफ़िकल्टी हो रही है लाइफ में, कहीं किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है या किसी वजह से कोई और परेशानी होती है जिसकी वजह से आप मिनिमम टाइम पे नहीं पूरा कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन को आप यूज़ करके जो भी आपका कंपोनेंट है रजिस्ट्रेशन करना है किसी प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, साथ ही साथ असाइनमेंट्स देना है या लैब कहीं किसी वजह से छूट पड़ा है जिसको आपको अटेंड करना है, प्रैक्टिकल आपकी छूट गई है मान लीजिए, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए आप मैक्सिमम ड्यूरेशन का किसी समय यूज़ कर सकते हैं। और उस बीच में आपका यही कोशिश होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके सारे कंपोनेंट को आप कंप्लीट कर लें, ताकि आपका प्रोग्राम जो है जितनी जल्दी अच्छे से अच्छे आप कंप्लीट करके अपनी डिग्री को आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि डिग्री जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप उस डिग्री को आगे पढ़ाई के लिए भी नहीं यूज़ कर पाएंगे और ना ही किसी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि अच्छे से अच्छे अपनी डिग्री को कंप्लीट करके और पढ़ाई को अपनी पूरी कर लें, ताकि आगे का प्रॉस्पेक्ट्स जो है आपका खुला रहे और आप उसको इफेक्टिवली कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कहेंगे कि थोड़ा सा मैं इस प्रोग्राम में रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर की भी जिक्र कर लेता हूँ, जैसा कि हुआ इस प्रोग्राम में कि जो भी बच्चे, जैसे मैंने बताया कि रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, तो रीजनल सेंटर जब आप ओडीएल प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें आपको एक रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे यहाँ दिल्ली के बच्चे हैं तो दिल्ली में हमारे यहाँ 3 रीजनल सेंटर हैं जिनके अंडर में अलग अलग स्टडी सेंटर्स हैं। तो आप लोकेशन के हिसाब से या अपनी सुविधा के हिसाब से अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके रीजनल सेंटर के अंदर में चूँकि बहुत सारे स्टडी सेंटर होते हैं तो उसमें ये दिखिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम किस स्टडी सेंटर के में एक्टिवेटेड है, तो आप उस हिसाब से स्टडी सेंटर सेलेक्ट करेंगे। रीजनल सेंटर आपको किस तरह से सपोर्ट करता है कि अगर मान लीजिए किसी तरह की दिक्कत आपको स्टडी सेंटर, चूँकि रीजनल सेंटर के ओवरऑल सुपरविजन में ही स्टडी सेंटर फंक्शन करते हैं, जहाँ पे आपको एकेडमिक काउंसलिंग की, प्रैक्टिकल्स की, लैब्स की, वर्कशॉप की या जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी सुविधा आपके स्टडी सेंटर पे
प्रोवाइड की जाती है, तो सबसे पहला आपका जो एडमिशन कंफर्म होने के बाद जो सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट रहेगा वो आपका अपना स्टडी सेंटर रहेगा, जहाँ पे कि आपके काउंसलिंग क्लासेस होंगे और प्रैक्टिकल लैब या जो भी संबंधित है आपके प्रोग्राम से संबंधित उस तरह की एक्टिविटीज़ आपके स्टडी सेंटर पे ऑर्गेनाइज की जाती हैं। वहाँ पे सपोर्ट के लिए जो है आप जो स्टडी सेंटर फंक्शनरी हैं जो इग्नू के लिए सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं या अदर पार्ट टाइम स्टाफ्स होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे इग्नू की तरफ से इम्पैनल होते हैं। और किसी तरह की दिक्कत होती है मान लीजिए, तो सबसे पहले आप स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके क्लासेस नहीं हो रहे हैं या शेड्यूल अभी नहीं दिया है उन्होंने, या लैब करने में किसी तरह की दिक्कत होती है, तो सबसे पहले आप स्टडी सेंटर पे अपना कांटेक्ट करेंगे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं स्टडी सेंटर, उनसे बात करेंगे। अगर आपकी परेशानी का हल वहाँ पे नहीं निकलता है तो फिर आप अपने रीजनल सेंटर को संपर्क करेंगे, उनसे आप बात करेंगे, उनको अगर चाहें तो एक रिटर्न में इन्फॉर्म करेंगे कि आपको किस तरह की डिफ़िकल्टी हो रही है स्टडी सेंटर पे करने के लिए या कोई दिक्कत हो रही है। तो ये जो दो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट हैं, उसके बाद जो होता है कि अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इग्नू हेडक्वार्टर है जो अगर वहाँ दो चीज़ों के समाधान नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पे आप स्टडी की जो है अपने स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो है ये जो संपर्क सूत्र जो मैंने बताया कि इन जगहों पे आपको किस किस तरह के सपोर्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं कुछ और जिक्र करना चाहता हूँ कि अलग अलग डिविजन्स से भी आपका एक परिचय एक तरह से करा दूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से। जैसा कि मैंने बताया कि जब आपका एडमिशन होता है तो जो हमारा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है जो कि यूनिवर्सिटी के सारे एडमिशन्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं और किस किस प्रोग्राम में ऑफर में क्या क्या होना है किस साइकिल में। उसके बाद जो एडमिशन का ज़्यादा डिटेल्स आते हैं सारे बच्चों के, उन सब जो डाटाबेस है उसको भी हैंडल करना होता है, किस तरह की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है, रिफंड है। तो कहने का मतलब एडमिशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न जो कि हेडक्वार्टर में है वो देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न है जो कि एक बहुत ही ज़रूरी डिवीज़न है जहाँ पे कि एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड, ग्रेड का डिग्री, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। और जो तीसरा मैंने बताया कि एमपीडीडी मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न है जो कि आपके स्टडी मटेरियल्स से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, आपको टाइमली डिस्पैच करके आपको प्रोवाइड किए जाते हैं स्टडी मटेरियल्स। तो ये तो रहा जरूरी। साथ ही साथ मैं ईएमपीसी का भी जिक्र करना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रोडक्शन डिवीजन, जिसके माध्यम से ये प्रोग्राम आप इस समय लाइव देख रहे हैं, जिनके माध्यम से हम ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन के प्रोग्राम से जो है एफएम रेडियो और दूरदर्शन चैनल जो हमारा उसके माध्यम से जो आपके लिए जरूरी प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए जानना एक यूनिवर्सिटी के बारे में। अब जो स्टूडियो की घड़ी हमारी तरफ इशारा कर रही है कि अब इस प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है, तो इस प्रोग्राम में अब इतना ही हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहेंगे कि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से जनवरी 2024 के लिए एडमिशन चल रहा है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का भी काम चल रहा है। तो अगर जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं तो वो एक बार ज़रूर लॉगिन करेंगे हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और अपने पसंद के प्रोग्राम में एडमिशन लेकर के आगे अपनी पढ़ाई करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।